नमो नमः दर्शकाः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते तत्र कश्चन विशिष्टः अतिथिः नाम डॉक्टर संध्या पुरेचावर्या या संगीतनाटक अकादम्याः तत्र अध्यक्षं निर्वहति। साम्प्रतं वस्तुतः भवन्तः जानन्ति एव यत् यूनेस्को इत्येतया संस्थया नाट्यशास्त्रस्य नाम या कीर्तिः अस्ति सा सर्वतः स्वीकृता अस्ति। तर्हि अद्यतनः साक्षात्कारविशेषः अपि एतेन विषयेण एव सम्बद्धः। मान्ये अत्र भवतः वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे स्वागतं। नमस्कारः च। नमो नमः। साधारणतः ये कलाकाराः भवन्ति नाम सङ्गीतप्रेमिणः, गीतप्रेमिणः, नृत्यप्रेमिणः वा ते सर्वथा संस्कृतेन सम्बद्धाः न भवन्ति, परन्तु भवती तु कलया अपि नाम कलाभिः सम्बद्धा अस्ति। अथ नाट्यशास्त्रविषये भवत्या PhD विद्यावारिधिः इत्यपि तत्र अर्जितः अस्ति। नाट्यशास्त्र अध्ययनम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं, संस्कृत अध्ययनम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति, च प्रासङ्गिकं च अस्ति। मम गुरु was absolutely sure that I have to do Sanskrit, and not only Sanskrit, not to Sanskritam, but Grantha Natyashastra, because Natyashastra Grantha iti Natyakala evam na darshayati, apitu Geeta, Vadana, psychology, sociology, Bhugola, Ganita, Samyak Samavesham karomi. And therefore, I think any artist in the world, especially Indian artist who wants to do any art forms, needs to know the Sanskrit and needs to know the Natya Shastra. This is what I've learned from the age of 7, and I'm still doing the same and following the same. वस्तुतः अभिनयस्य अनेके प्रकाराः नाट्यशास्त्रादिषु ग्रन्थेषु वर्णिताः सन्ति, परन्तु भारतीयरङ्गमञ्चे, वैश्विके रङ्गमञ्चे वा आधुनिके परिदृश्ये वा तेषाम् अभिनयानां तत्र प्रासङ्गिकता नास्ति इति आक्षेपः भवति। एतस्य उत्तरं किम्? नाट्यशास्त्रे अभिनयस्य 4 प्रकाराः वर्णिताः, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। 2 और हैं, सामान्य अभिनय और चित्राभिनय, 24वें अध्याय में लिखे हुए। और ये सभी आज के युग में हम आंगिक अंग का प्रयोग करते हैं, वाचिक शायद प्रकार करने की पेशकश अलग हो गई होगी, या तो मॉडर्न वे से उसको हम तो मॉडर्निटी और क्रिएटिविटी और इनोवेटिव, ये तीनों चीज़ों का भारत पूरा परमिशन देता है। आकृत्या चेष्टया चिन्ह जात्या विज्ञाय वस्तुतः स्वयं वितर्क कर्तव्या नृत्याभिनयन प्रति, हस्ताभिनयन प्रति, नाट्याभिनयन प्रति। आकृति, चेष्टा, चिन्ह, जाति, मतलब आप उसकी आकृति देखिए, आप उसकी चेष्टा देखिए, गतिविधियाँ देखिए। चिन्ह मतलब स्पेसिफिक जो चिन्ह है वो देखिए, हाव आकृति, चेष्टा, चिन्ह। जात्या उसकी जाति, स्पीसीज है, मतलब प्राणी वर्ग में है, पक्षी वर्ग में है, मनुष्य वर्ग में, राक्षस वर्ग में, गंधर्व वर्ग में, कौन से वर्ग में है, वो आप उसकी जाति देख ली। और कथा वस्तु, यानी आप उस कथा वस्तु के हिसाब से वो सब चीज़ें देख लीजिए और स्वयं तर्क वितर्क करके आप अपना आधुनिक हस्त विक्षेप, आधुनिक पाद विक्षेप, आधुनिकता उसमें ला सकते हो। आपके समय में जो आपको जरूरी है, जो जरूरी लगता है, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। जितना नाट्यशास्त्र पहले का काल में फॉलो होता था, उससे अधिक शायद आज हम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन की परमिशन देते हैं। वस्तुतः नाम अन्याः याः कलाः सन्ति तासाम् अपि समासां कलानां वस्तुतः तत्र प्रतिपादकं तत्र शास्त्रमस्ति नाट्यशास्त्रम्। एतस्य प्रतिपादनं कथं कर्तुं शक्यते? नाट्यशास्त्र के पहले फर्स्ट अध्याय, न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा कला न सा विद्या। सो आई थिंक देर इज नथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू नाट्य. So how it is connected to Natya? Each chapter, if you go chapter wise, the first chapter talks about the Adhyatma, the second chapter talks about the Puja Vidhi, Ranga Puja Vidhi, Ranga Mancha. The third chapter is a Ranga Mancha, is a sculpture, and the how to create the Ranga Mandapa is there. The fourth chapter, which is talking about the Karanas, is the body languages, the Nritya part of it. So the Natya Shastra is always formed in micro to macro. Now if I say Angika Abhinay, if I say the Shiro Veda, Drushti Veda, Griva Veda, these are all scientific Vedas given in the science. Even when you go to the doctor, if you have a spondylitis problem, he will tell you to do some movement of the neck or the head
What is that? That is our Shiroveda. If you have got specs, and if you go to the doctor for the eye specialist, he will tell you to do eye exercises. What is this? This is given in the Natya Shastra. This is a science. So you cannot run away from saying that science is different, mathematics is different, dance is different, drama is different. So I feel that what 64 kalas which we were talking previously in our list of the 64 kalas, all are part and parcel of Natya Shastra. PhD इति अस्ति, विद्यावारिधिः अपि अत्र भवति अस्ति। तर्हि तत्र कः पक्षः नाट्यशास्त्रे यः वर्णितः तत्र भवत्यै अधिकं रोचते, यत् विशिष्टः नाम पक्षः एषः नाट्यशास्त्रस्य? रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास्तथा आतोद्यम गानम रंगश्च संग्रह. So the whole Natya Shastra is divided only into this one shlok. Rasa chapter, Bhava, Abhinaya, all four Abhinayas, Dharmi, Vritti, Pravrutti, two Siddhis, Daivi Siddhi, Manushi Siddhi, Swara, all the music chapter, Atodya, all four types of chapters of Sushira, Ghana, Avanadya, Tar. Those are the four chapters of Avan. And Siddhi, Swaras, Tatha, Atodya, Ganam, Gayan, the types of Dhruva Gana, and Ranga Mancha. Beyond that, there is nothing in the Natya Shastra. नाट्यशास्त्रे ये वर्णिताः विषयाः ते प्राक्कालिकाः न सन्ति इति भवत्या तु तत्र सर्वत्र विज्ञापितमेव पूर्वं, परन्तु तथापि रङ्गमञ्चादिषु तेषां तत्र कलादीनां कथमिव प्रविधेः आगमने सति तत्र अवरोधः उत्पन्नः वा अथवा किमपि काठिन्यम् अनुभूतं वा? आधुनिक युग में हम उसका संतुलन कैसे बनाएं, हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं, बिकॉज हमारी ग्रहण शक्ति कम हो गई है. When we translate our Shastra, we do not translate it the way everybody translate it in their own way. जो पुरातन विचार के हैं वो बोलते हैं यही ठीक है, अर्वाचीन विचार वाले बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं वो गलत है. So I feel here the आधुनिकता is in your mind, it is in your heart and it is in your विचार. सो आचार विचार को अगर हम अपने ही शास्त्रों को आधुनिक रूप में देखने जाएं तो वो बिल्कुल नाट्य शास्त्र बिल्कुल उसमें फिट बैठता है. साहित्य अकादमी नाम्नी या संस्था अस्ति, तत्र संस्कृतस्य कृते तत्र प्रभावः दृश्यते, नाम पुरस्काराः दीयन्ते. सङ्गीतनाटक अकादम्यां संस्कृतस्य कृते नाम कीदृशः पुरस्कारः सृष्टः वा? Me being the Sanskrit sadhak and performing arts, I am awarded. So it is very open. It is not restricted only to Sanskrit. I will call it any regional language. If a person is working on the performing art with any regional language, along with their own performing arts, are open for the overall contribution award. सैद्धान्तिक रूपेण एव कश्चन तत्र ग्रन्थं लिखति नाट्यशास्त्रे, तर्हि तस्य कृते अत्र पुरस्कारस्य नास्ति, बट वी कैन स्टिल we can think of it, yes. मम अन्तिमः प्रश्नः, यत् नाम जगति नाम नाट्यशास्त्रं प्रति इदानीं रुचिः वर्धिता अस्ति, तर्हि जगत् कृते अथवा ये आधुनिकाः युवानः सन्ति तेभ्यः भवत्याः कः सन्देशः स्यात् यत् नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं नाम एवं विधं तत्र विधातव्यं? यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नील नलिनी दलम इव विकास्यते बुद्धि. आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, देखना चाहिए, पंडितों के साथ रहना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए. अगर ये सब करते रहेंगे तो नाट्य शास्त्र कहो या कोई भी शास्त्र कहो, जो भी कलाएं आप कर रहे हो उसमें आप डेफिनेटली कुछ न कुछ तो लेके ही जाओगे, कुछ न कुछ करके जाओगे. और डेफिनेटली शास्त्र और संप्रदाय के साथ गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी है. सो आप अपने गुरु को बनाए रखिए, अपने गुरु कोई
कोई भी कोई ऐसे गुरु को रखिए साथ में कि जो आपको ज्ञान देता रहे। बहुशः धन्यवादाः। मन्ये अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति ते नाम कृतकृत्याः अनुभवेयुः यत् कथं सैद्धान्तिकं ज्ञानं प्रायोगिकं ज्ञानम् उपकरोति इति। तर्हि भवत्याः व्यक्तित्वं तथाविधं तत्र सर्वान् तत्र उपकुर्यात् इति अहं मन्ये। अत्र भवती वार्तावल्यै तत्र समयं प्रदत्तवती, तदर्थम् अहं बहुशः तत्र धन्यवादान् समर्पयामि भवत्यै। धन्यवाद। नाट्यशास्त्रविषयकः ज्ञानप्रबोधकः आसीत् साक्षात्कारविशेषः एषः। अस्तु, कलाविशेषाय समर्पिते अद्यतने अङ्के